A famous quote says, "The journey of 1,000 miles begins with one step." Hello everyone, I am going to start a course on C programming, and this is the first video where I am going to discuss some basic things about programming. Upon the completion of this session, the learner will be able to understand what is program, why we need programming, programming languages, and language translators. So let's discuss about what is computer program. See, computer is a general purpose electronic machine which you can use to perform any computational task. But how do you communicate with computer? Like suppose if we want to add two numbers, then it is not like that we will say, "Hi computer, I want to add two numbers 3 and 4. So tell me the addition of 3 and 4. आम कंप्यूटर को एभली इंस्ट्रक्शन दे परिबानी जे हाई कंप्यूटर मु 2 और 3 को ऐड करबा को चाहूची सो मते तार एडिशन नो रिजल्ट आउटपुट भाबरे प्रोड्यूस कर. ओके नो, कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज. कंप्यूटर ए लैंग्वेज को बुझी ही परिबनी. सो व्हाट विल वी डू? We will write some instruction or sequence of instructions and give those set of instruction to the computer, and accordingly the computer will perform our task. So those set of instructions or sequence of instructions are called what? Program. Okay, the set of instruction जो commands हमें दौचे, जो instruction हमें दौचे किसी गोटे task को perform करने को computer को, से command से instructions को हमें कहूचे तार set को program बोले. Okay, now coming to why we need programming. See, when we communicate with each other, then the language may be Hindi, English or any other. For communication, first we have to know alphabets, then words and then frame sentences to communicate. आम जिते आउ जने पर्सन सहित कम्युनिकेट करूचे, देन आमको गोटे लैंग्वेज दरकार पड़ुचे, से लैंग्वेज हिंदी हो पारे, इंग्लिश हो पारे, ओडिया हो पारे, किछि भी हो पारे. आउ प्रतिटी लैंग्वेज फर्स्ट आमको अल्फाबेट्स शिखिबार अछि, तार देन अल्फाबेट्स को कलेक्ट करके वर्ड्स शिखिबार अछि, देन वर्ड्स को नेकी सेंटेंस को फ्रेम करके आमे कम्युनिकेट करूचे. Similarly, when we write a program, we need to know the programming language for it, which consists of character sets, keywords, rules and syntaxes, so that we can submit that program to the computer and accordingly get the output. So programming language are necessary because they serve as the bridge between human instructions and a computer system. Human जो command दौची, जो instructions दौची computer को, से instruction आउ computer system भितरे गोटे bridge भाबरे, गोटे interface भाबरे काम करूची हमर programming language. And to write a program, we use its language. आमे गोटे program लिखिया पई तार language को use करिबा, which we call programming language. But computer can understand only binary or machine language. आमे जानिछे जे computer only binary language बुझी परिबो और हम ताको machine language भी कहि दो, which consists of only zeros and ones, जो तरीके only 0 और 1 format रे ही लिखा हेतिबो. And binary language is extremely difficult for users to write, understand and manage. आमे जदि 0-1 format रे किछि गोटे लिखुचे एठी, so can you tell me what is this? No, काहे कि आमे ताको बुझी परिबानी कोन लिखा हेछि. Clear? But जदि आमे एठी लिखिबा hello world, so कि आमे इजीली बुझी परले जे hello world लिखा हेछि. Sithimai, we write programming in high-level languages, that is natural English language, which consists of letters, numbers, symbols, etc. जेमति कि आमे एठी कहले hello world, आमे जदि एभली लैंग्वेज रे कंप्यूटर को किछि लिखि कि दोजे, रादर कंप्यूटर बुझी न परिबो, बट ह्यूमंस बुझी परिबो. बुझिला नै? बट जदि 0-1 फॉर्मेट रे लिखिबा, देन कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हेले भी यूजर ताको बुझी परिबनी. राइट? So then how can the computer understand our program? Computer हम program को केभली अंडरस्टैंड करिवो? It converts the user language to binary language. आमे कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज जो इंस्ट्रक्शन दबा, जो कमांड्स दबा, से ताको प्रथमे कन्वर्ट करिबा बाइनरी लैंग्वेज रे and then executes and produce the output. Okay, see, in first step here natural English language जहा को आमे कहूचे हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज फर्स्ट कन्वर्ट हबो हमर मशीन लैंग्वेज, जोटा होची बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जहा को आमे कहूचे. So high level language binary language रे convert हबो, then CPU ताको run करिवो, then only CPU executes it or runs it. Okay, so next we are going to discuss levels of programming languages. First is
low level programming language and second is high level programming language. Two types of languages are there, and again low level programming language is divided into two, that is machine level language and assembly level language. So coming to machine level language or machine code. It is a machine oriented language, that is this language is very close to computer hardware. That's why it is known as low level language. Machine language କ'ଣ machine oriented language, so that सेटा computer hardware आमे जो कहूचे computer CPU रो बहुत close ହେଇଥାଏ, बहुत पाखापाखि थाए, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ low level language ବୋଲି କହିଥାଉ. And this language is consist of only zeros and ones. ଆମେ ଜାଣିଛେ machine level language जोटा कि otherwise ଆମେ କହିଥାଉ binary language ବୋଲି, जो only zeros and one ही present थाए. So to write a program in machine language, generally we need an extensive knowledge or deep knowledge of system configuration and architecture. System रो और आमे ताको CPU भी कहि परिबा, CPU रो deep knowledge रहिबा दरकार तार configuration और architecture उपरे, जदि हमको कोनोसी प्रोग्राम को machine level language रे लिखिबार अछि. Okay. So next, the circuitry of CPU is wired in such a way that it immediately recognizes the machine language and executes it. CPU को एभଳି भाबे वायरिंग भी करा जाय थाए जे कि immediately suddenly हमरो recognize करि परिबो machine level language को, आउ तार जहाँ भी प्रोग्राम लिखा हितो ताको से execute करि परिबो. ओके, सपोज जेमति पूर्व स्लाइड रे मु कहितली we write hello world, माने कर आमे लिखुचे hello world, सिंपल लिखिले. बट याकु जदि मु कहबी machine level language लिखो तो it may be 1011001111 like this. Okay, so এটা বুঝা পড়ুছি. No one can understand, user normally cannot understand the machine language. Okay, because it is consist of zeros and ones, it is very tough to understand for users, only computer can understand this. See, now what are the advantage of this machine language? आमे जानले एटा केवल कंप्यूटर बुझी परिबो, यूजर तो बुझी ही परिबोनी, तो तार किछि एडवांटेज थिबो जोथि आमे मशीन लेवल लैंग्वेज को यूज करूचे. फर्स्ट एडवांटेज कोन, now all programs are written already in 0 and 1 format, so no need to convert it. आमे मशीन लेवल लैंग्वेज रे ऑलरेडी प्रोग्राम सब 10 फॉर्मेट रे ही लिखा हेतिबो, सेति हमको कन्वर्शन करिया दरकार नै. कंप्यूटर कैन डायरेक्टली एग्जीक्यूट द प्रोग्राम. कंप्यूटर पाखो को जहां भी प्रोग्राम हमें लिखियो मशीन लेवल लैंग्वेज रे डायरेक्ट सीपीयू ताको रन करि दबो. एटा होजे हमर एडवांटेज. बट डिसएडवांटेजेस भी अछि. सो ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस कोन अछि? फर्स्ट, इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस. फर्स्ट डिसएडवांटेज होछि जे ह्यूमंस ए लैंग्वेज को बुझी परिबेनी, इट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमंस. एंड नेक्स्ट कोन, see, next drawback is what? The program written in machine language are system dependent. Okay, system dependent means कौन? जदि हमें गोटे मशीन ने बा गोटे कंप्यूटर रे मशीन लेवल लैंग्वेज रे किसी प्रोग्राम को लिखुचे, देन सेम प्रोग्राम को हमें आउ गोटे कंप्यूटर रे ताको रन करई परिबा नाही, जोटा को हमें कहजे प्रोग्राम्स आर नॉट पोर्टेबल. गोटे प्रोग्राम आउ गोटे मशीन ने बा आउ गोटे सिस्टम रे रन हेई परिबने. जो प्रोग्राम को हमें जो कंप्यूटर पाई डेवलप करिचे ओनली सेही कंप्यूटर ही से प्रोग्राम को रन करियबो, जोटा होची तारो डिसएडवांटेज. ओके, so to overcome these drawbacks, next language come, that is assembly level language. So in this language we can use mnemonic codes and symbols. किसी mnemonic code और symbols को हमें use करचे assembly level language. Now here, how can we write 1 plus 2? यदि हमको 1 plus 2 लिखिबार अछि ताले हमें assembly level language रे केमति लिखिबा? So we have to write add for plus. Plus पई हमको add लिखिबार अछि and then those numbers. Okay, for subtraction we can write sub and then numbers. If we want to move some data from one register to another, then we write move code, then the register's name or those numbers. Okay, so ए सब codes को ए सब symbols को हमें use करता हूँ assembly level language. So these instructions are easily understood by users because of codes, but still it is low level language because it is very strongly bound with machine level language. जदियो हमें ए symbolic codes पई किछि तो assembly language को बुझी पारुचे, but फिर भी याको low level ले निया जाउची. कोन भाई? कहीं ना assembly level language machine level language सहित बहुत strongly bind हेइथाय. जदि हमें languages रा hierarchy को देखिबा, then प्रथमे हमरा से hardware, first comes hardware, next machine level language and next comes assembly level language. Okay, but see,
Computer cannot understand assembly level language. It can only understand 0 and 1, that is binary language. So the program written in assembly language first have to convert it into machine language. And who is going to convert that? That is assembler. Okay. So assembler will generate machine code corresponds to that program. Okay. Because of the conversion, it is slower than machine language. जदि ये आम कन्वर्सन करुचे आ गोटे स्टेप आमर इंक्रीज हो गला बाइनरी लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज कौन होता डायरेक्ट सीपीयू रिकॉग्नाइज कर दउथला 01 फॉर्मेट रे प्रोग्राम लिखा होतला आ ताको से इमीडिएटली रन करी दउथला बट एठी हमको प्रथमे असेंबली लेवल लैंग्वेज टा कन्वर्ट करबा पड़िबो मशीन लेवल लैंग्वेज रे जे कि कन्वर्ट करूचे हमर गोटे ट्रांसलेटर प्रोग्राम जा को हमें कहूचे असेंबलर सो एठी जेतु कन्वर्शन होउची सो मशीन लेवल लैंग्वेज टू ये आउट के स्लोअर हो गला but still the drawback is that program is dependent. Program is machine dependent or program is dependent on the machine because every assembly language is designed specifically for a specific computer architecture. Here also programs are not portable. जेतु एठी भी से मशीन डिपेंडेंट रहुची सो एठी भी हमें प्रोग्राम्स को पोर्ट करि परिबाने बुझियला so to overcome this drawback to make the program portable so that we can run the same program on different machines next concept comes that is high level language so C COBOL Fortran Java Python Perl these are some high level languages and the programs written in this language are not machine dependent एई लैंग्वेज रे हाई लेवल लैंग्वेज रे आमे जेतेबेले प्रोग्राम्स लिखुचे सेगुडी को मशीन डिपेंडेंट हेई न थाए but sometimes operating system dependent like program written for windows cannot run in ios machine dependent तो हेलानी ताको हमें portable करि पारले first thing but sometimes कोन हेइताय operating system dependent हेइ जाय थाए ता मींस कोन जदि हमें windows operating system में किछि गोटे प्रोग्राम लिखुचे then maybe किछिटा प्रोग्राम थाइ पारे जोटा कि ios रे रन हबनी sometimes okay so why it is called high level because it is close to users जेमती कि जदि आमे लैंग्वेज रो हायरार्की के देखिबा मु पूर्वरु कहितिली फर्स्ट आसीबा हमर हार्डवेयर नेक्स्ट मशीन कोड नेक्स्ट असेंबली कोड नेक्स्ट हाई लेवल एंड नेक्स्ट कम्स फाइनली यूजर्स सो यूजर रा क्लोज हेतिबारु याको आमे कहूचे हाई लेवल लैंग्वेज and rather than dealing with memory addresses registers machine codes high level language deals with variables functions loops and evaluate mathematical notations so it is like more of english language type okay and see when we write a program in it we don't need to go into that much detail and knowledge like architecture and configuration of cpu जेमती मशीन लेवल लैंग्वेज पई हमरो डीप नॉलेज दरकार थिला सीपीयू रो जानिबार सीपीयू रो कॉन्फ़िगरेशन कोन तार आर्किटेक्चर कोन हाई लेवल लैंग्वेज लिखिया पई हमको से सब किछि भी डिटेल नॉलेज दरकार नै जानिबा सो हियर वी कैन इजीली राइट 1 + 2 okay but the programs written in high level language are needs to be converted into machine code high level language program machine code रे convert करिया पड़ियो काहे ना machine code छडा कंप्यूटर ता किछि बुझी ही पारेनी so who is going to convert it there are two translator programs one is compiler and another is interpreter see one is compiler and another is interpreter so what compiler will do it will take the complete source code that is the program written in high level language and convert it into machine code and then after converting the whole program it will execute it but what interpreter will do interpreter will not convert the complete program code into machine code. It reads line by line of the program and then execute the program line by line. Okay. Finally, coming to the language translators that are assemblers, compiler and interpreter. So first, assembler is a translator program which translates or converts the programs written in assembly level language into machine level language that is 01 format. And compiler and interpreter both are translates high level language to machine language देखो एठी compiler भी हमर high level language को machine level ले convert करछि interpreter भी high level language को machine level ले convert करछि so दीटा भीतर difference कोन को language compiler यूज करंदी को language interpreter को यूज करंदी compiler कोन पय यूज करंदी interpreter कोन पय यूज करंदी so देखिबा दीटा जाक भीतर difference कोन what is the difference between compiler and interpreter see in first step, compiler converts
it before the execution of the program. Compiler program को execution पूर्वरु ही total code को convert कर दबो. But in interpreter, it converts while the program is executing or running. That is conversion and execution done parallelly. Interpreter रे कौन हबो line by line conversion हुए. So at a time से convert कला, execute कला, second line convert कला, execute कला, सेमती third line convert कला, execute कला. बुझियला? That means conversion और execution दीटा जगह हमरा parallelly run करेबे. Clear? Next coming to compiler, it is faster. Faster, obviously faster हबो. कहीं जदि आम होल कोड को एंटायर कोड को एट ए टाइम कन्वर्ट करछे देन एग्जीक्यूशन पाई पठाउछे देन एटा फास्टर हबो. रादर इंटरप्रिटर कोन करछि लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करछि एग्जीक्यूट करछि कन्वर्ट करछि एग्जीक्यूट करछि. सो जेहेतु से लाइन बाय लाइन करछि से निहाती स्लोयर हबो. क्लियर? नेक्स्ट कमिंग टू कंपाइलर, here you get the list of errors at last, that is after compiling the complete program, the entire program. जेतेबेले आमे एंटायर प्रोग्राम को कंपाइल कर दोचे तापर ही हमको लिस्ट ऑफ एरर्स शो करोची. बट इंटरप्रेटर केस रे कोन हबो, हियर यू गेट द एरर व्हाइल रनिंग. सो व्हेन यू एनकाउंटर एन एरर इट विल स्टॉप देयर एंड वेट फॉर द एरर टू रिजॉल्व. जेतेबेले एनकाउंटर करिवो इंटरप्रेटर कोनोसी एरर को से कोन करिवो सेही स्टेप रे ही ताको स्टॉप कर दबो एंड वेट करिवो जे पर्यंत से एरर टा सॉल्व न हेची से सेकंड लाइन को जाई कि ताकू ना कन्वर्ट करिवो ना एग्जीक्यूट करिवो. बुझियला? नेक्स्ट कमिंग टू कंपाइलर, किछरे लैंग्वेज अछन जो माने कंपाइलर यूज करछन जेमति कि हम एग्जांपल दे परिबा सी सी प्लस प्लस सी शार्प एक्सेट्रा. से बली इंटरप्रेटर पाइथन रूबी पर्ल ए सब लैंग्वेजेस हमर इंटरप्रेटर को यूज करछन. क्लियर? सो जदि हम गोटे रियल एग्जांपल देखिबा, रियल वर्ल्ड एग्जांपल सी. सपोज एनी जापान डेलीगेट्स कम टू मीट आवर पीएम. Here is your Japan delegates and here is your PM. Okay. So let's consider they only know Japanese. The Japan delegates only knows Japanese, not Hindi or English. And our PM is not able to understand Japanese. He is only know Hindi. Okay. Then एटी से माने कन्वर्शन केमती करिवे. जापान डेलीगेट्स तो ओनली जापानीज जानिचंदी, आम पीएम तो ओनली हिंदी जानिचंदी. तो से माने कन्वर्शन केमती करिवे, तांको भितरे कम्युनिकेशन केमती हबो. सो देन ही नीड ए ट्रांसलेटर. दे बोथ नीड ए ट्रांसलेटर. ट्रांसलेटर रो काम कोन जे कि जापान डेलीगेट्स जापानीज रे जहां भी कहले से लाइन को कन्वर्ट करिकि हिंदी रे हमर पीएम को जणेबो. आ पीएम हमर हिंदी रे जहां भी कहले ताकू कन्वर्ट करिकि जापान डेलीगेट्स को कहबो. बुझियला? माने करो जापान डेलीगेट्स गोटे लाइन कहले ताकू कन्वर्ट कला देन पीएम को कहला देन पीएम गोटे लाइन हिंदी रे कहले ताकू कन्वर्ट कला जापानीज रे आ ताकू जापान डेलीगेट्स को कहला. सो इट ट्रांसलेटर होची एभली गोटे प्रोग्राम जे कि जापानीज भी जानिथिबो दैट टू हिंदी भी जानिथिबो. सो से जापान डेलीगेट्स को जापानीज को हिंदी रे कन्वर्ट करि परबो आ पीएम को हिंदी को भी जापानीज रे करि परबो. सो इट्स ए काइंड ऑफ इंटरप्रेटर. ओके, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट होची. बट जब हमें सेकेंड केस देखिबा, जेमति हमें सपोज वी आर वाचिंग ए तेलुगु मूवी, सो दे हैव डब्ड दैट मूवी एंड गिवन दो सबटाइटल्स इन हिंदी लैंग्वेज. सो व्हेनेवर वी वॉच दैट मूवी एवरी टाइम नो नीड ऑफ कन्वर्शन फ्रॉम तेलुगु टू हिंदी बिकॉज ऑलरेडी मूवी टा टोटल कंपाइल हे जाइथिबो. देन जाय के हम तार सबटाइटल्स को हिंदी रे देखि पाउछे. बुझियला ना कि हमें गोटे लाइन देखिले देन से ताको कन्वर्ट कला हिंदी रे, नेक्स्ट लाइन देखिले नेक्स्ट से ताको कन्वर्ट कला हिंदी रे. नहीं, टोटल मूवी एंटायर मूवी फर्स्ट कन्वर्ट होची हिंदी को देन जाई कि आउटपुट आसुची आ हमें ताको हिंदी डब भाबे रे देखि पारुचे. सो एटा होई जिवो गोटे काइंड ऑफ कंपाइलर. इट्स अ काइंड ऑफ कंपाइलर. ओके, सो it's all about language translators, and that's it for this video. In the next video we will discuss about C programming, the basics of C programming, that means features, birth of C, etc. Thank you.